Hello everyone, what's up? Welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video I'm gonna share this makeup look with you. So वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किया है सबका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. After completing my CTM routine, here I am using first the primer. So this is the basic and very important part of makeup. After that, here I am using concealer to hide my pigmentation and pimple spots. So here I am using a brush to blend my concealer. Blending is so much important, you have to blend very well. Then here I am using a compact powder to set the concealer. If you don't have any compact powder, you can use any loose powder also. Then here I pick a shimmery brown shade and draw my crease line and blend it very well. After that, I place the black shimmery shade on my eyelid right down the crease line and blend it also very well. Then after that, I curl my eyelash with a eyelash curler. तो यहाँ पे मेरा लैशेस जो है वो कर्ल हो चुका है एंड इट्स टाइम टू वेयर द फॉल्सीज. आफ्टर दैट आई पिक द ब्लैक शिमर शेड एंड स्मच माई अंडर लैश लाइन ताकि थोड़ा स्मोकी सा इफेक्ट आ जाए. आफ्टर दैट हेयर आई एम यूजिंग काजल, सो I draw the waterline, the underwater line actually. After that, I draw my eyebrows with eyebrow gel. After that, here I am using foundation. तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन को डॉट डॉट करके पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया. उसके बाद मैंने एक स्पंज के हेल्प से पूरा ब्लेंड कर लिया है. सो हियर आई एम यूजिंग द ब्लश. तो यहाँ पे मैं एक पेची पिंक कलर से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं थोड़ा सा मेरे नोज़ को कंटूर कर लूँगी. तो ये मुझे ना बहुत ही पसंद है. मैं अपने फेस को कंटूर नहीं करूँगी आज, तो थोड़ा सा नोज़ को कंटूर कर लूँगी. उसके बाद जो ये कंसीलर है उसको मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा नोज़ जो है वो हाईलाइटेड दिखे. After that, I am using the highlighter, and this is a favorite part, and here I am using highlighter in my cheekbones and my eyebrow bone, on my nose and chin. So it's done. And last, here I am using a nude shade to apply on my lips, and it looks so much pretty. So here I am done with my makeup look. तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो. अगर अच्छा लगा है मेरा मेकअप लुक तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. साथ ही में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए. तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू.